Hello students, how are you all? I hope all of you are fine, doing great at your homes. So students, as you all can see that I was explaining you division of fractions. So today only some of the students have watched the videos and I have checked the comments till 12 p.m. So from those comments I got to know that one student has not understood division of fractions. तो मैं आपको जो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस है आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट ओनली. एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं ऑल द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस. सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू द एक्सरसाइज क्वेश्चंस सो द योर टॉपिक विल बी क्लियर्ड बाय दैट ओनली. ठीक है, आपको समझ में आता जाएगा. सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, वॉच द वीडियो केयरफुली. अगर आपको कहीं पे भी समझ नहीं आता तो पॉज करिए, दोबारा प्ले करिए, यू विल गेट टू नो. So I have to start from option number E. We have done till A, B, C, D. A, B मैंने करवाया था क्लास वर्क में and C and D was your homework, right? So we have to solve from E option. तो आपका एक्सरसाइज 5D E ऑप्शन. आपको कल जो वीडियो में मैंने एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन किए थे, यू डोंट हैव टू डू एनी एग्जाम्पल इन क्लास वर्क कॉपी, जस्ट डू द एक्सरसाइज क्वेश्चंस. ओके, सो 19/2 डिवाइडेड बाय 38. ये है आपका क्वेश्चन. एज आई हैव टोल्ड यू द फर्स्ट स्टेप वॉज दैट कि अगर कोई भी होल नंबर है तो एक्सप्रेस इट इनटू फ्रैक्शन. 38 इज अ होल नंबर, it was not having any denominator. So what I have done, I have expressed it into a fraction. Okay, so after expressing it into fraction, what will be the next step? The next step will be to take the reciprocal. अब आप reciprocal किसका लेंगे, इसका लेंगे या इसका लेंगे? तो राइट लाइक दिस, फर्स्ट सेकेंड. तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, यू ऑलवेज हैव टू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द सेकेंड फ्रैक्शन. यू ऑलवेज हैव टू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द सेकेंड फ्रैक्शन. सो 19/2 अब रेसिप्रोकल होगा 1/38. Now after taking the reciprocal you have to multiply it with the first one. अब आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. Now I have taken the reciprocal, I have multiplied it. Now what will be the next step? If you know the answer, please pause the video and reply to me in the comment section. The next step will be to reduce it. So 19 ones are 19, 19 twos are 38. Now what is the next step? Another step will be to multiply the numerators and multiply the denominators. So the answer will be 1/4 after multiplying the numerators and denominators. I hope you have understood now. The student who has commented, I don't know who has commented, I think it's स्वेक्षा और अंशिका, दोनों में से किसी एक का कमेंट है. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन 7 3/5. ये आपका F ऑप्शन है. 7 3/5 डिवाइडेड बाय 1 12/45. So as you all can see that both the fractions are mixed fractions. Okay, so here the first step will be to convert both the fractions into improper fraction. So 5 7s are 35, 35 plus 3, 38/5 divided by 45 ones are 45, 45 plus 12 is 57. So 57/45. Now we have got both the fractions into improper forms. हमें improper में मिल गए हैं दोनों fractions. Now what is the next step? If you all know the next step, after this please tell me. Pause the video and reply to me in the comment section. अगला स्टेप होगा आपका टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ द सेकेंड फ्रैक्शन, फर्स्ट सेकेंड. सो सेकेंड फ्रैक्शन का क्या लेना पड़ेगा आपको, रेसिप्रोकल. हाउ डू वी टेक द रेसिप्रोकल? वी मेक द डिनोमिनेटर एज न्यूमरेटर, द न्यूमरेटर एज द डिनोमिनेटर. ओके, नाउ द डिवाइड साइन विल बी कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लाई साइन एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द फर्स्ट वन. Right? So now we have to check whether we can reduce it or not, either vertically or diagonally. या तो vertically या तो diagonally क्या ये reduce हो रहा है? Yes, it is reduced.
5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57। इतना रिड्यूस हो गया। अब इसके बाद भी रिड्यूस हो सकता है या नहीं? तो बिल्कुल हो सकता है। वर्टिकली अगर आप चेक करें तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। नाउ अब हमारे डिनोमिनेटर क्या बचा? 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 and numerator is 2 multiplied by 3. So 2 3s are 6. So what is the answer of this question? Answer is 6. So I hope you have understood. Now coming to the G option. जिसको डिवीजन नहीं समझ में आया है वो इन ऑप्शंस को ध्यान से देखता जाए. He or she can easily understand after that. Now coming to the G option. G option is 2 9 upon 45 divided by 4 2 upon 5, right? Again we are having two mixed fractions. Now what we have to do? अगर आपको पता है तो please reply to me in my comment section. Okay, so if you know what we have to do, first reply to me in my comment section. Yes students who have replied that we have to convert the mixed fraction into improper fraction, their answer is right. So for converting it into improper fraction, the first fraction is 45 multiplied by 2. 45 multiplied by 2 is 90 and 90 plus 9 is 90 plus 9 is 99 upon 45, right? 90 plus 9 is equals to 99 upon 45. Now the second mixed fraction will be converted into improper fraction. 5 4s are 20, 20 plus 2. So 22 upon 5, right? So who has not understood about the division of fractions? This is the first fraction, this is the second fraction. हमें क्या करना होता है? हमेशा सेकेंड वाले फ्रैक्शन यानी दूसरे फ्रैक्शन का वी हैव टू टेक द रेसिप्रोकल एंड हमें फिर क्या करना पड़ता है? डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा. वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द फर्स्ट वन. Now we have to check that can we reduce anything over here. So diagonally it is reduced. 5 1s are 5, 5 9s are 45. Now here I can see that both comes in the table of 11. So 11 2s are 22, 11 9s are 99 and 9 1s are 9 1s are. So what is left over here? Only 1 by 2 is left. What is left? 1 by 2. That means the answer of this question is 1 by 2. I am explaining it again. 5 1s are 5, 5 9s are 45, 11 2s are 22, 11 9s are 99. अब यहाँ भी 9 था आपका, यहाँ भी 9 था. In the numerator also, in the denominator also. So it will be 9 1s are 9, 9 1s are 9. So 1 1s are 1, 1 2s are 2. So 1 upon 2 is the right answer. Now coming to the H option. H option is 2 11 upon 12, 2 11 upon 12 divided by 15 upon 18, right? So one fraction is mixed fraction and another one is a normal fraction. Okay, so which type of fraction is this? My query is from all of you. If you know that कि कौन से type का fraction है, please pause the video and reply to me in the comment section. Now I am going to solve this. So first step will be to convert this into improper fraction. 12 2s are 24 and 24 plus 11 will be 35. So it will be 35 upon 12 divided by 15 upon 18. Now what will be the next step? The next step will be to take the reciprocal of the second fraction and multiply it with the first one. So what I have done, I have taken the reciprocal of the second fraction and multiplied it with the first one. So now we have to reduce it. 6 2s are 12, 6 3s are 18. From the same table, 5 3s are 15, 5 7s are 35. Now 3 1s are 3, 3 1s are 3. What is left? 7 upon 2. इसको आप mixed fraction में लिख सकते हैं 3 1 upon 2. What is the answer? 3 whole 1 upon 2. Now coming to the next option, that is I.
हम लोग आई ऑप्शन पे आते हैं अब. वी हैव डन टिल एच ऑप्शन. सो आई ऑप्शन इज 45/21 divided by 127/42, right? So this is a mixed fraction. Here now the second fraction is a mixed fraction. So our first step is to convert, if there are any mixed fraction, to convert them into improper fraction. So I am converting this into improper fraction. 42 ones are 42, 42 plus 27, it is now 69/42 divided by 45/21 divided by 69/42, right? Now what we have to do, we have to take the reciprocal of the second fraction. So it will be 42/69, then we have to multiply it with the first one. I am repeating it again and again every step so that you can remember कि आपको क्या करना है हर step में. Okay, now we have to check that can we reduce it or not. तो as you all can see that ये आपका जो है 3 2s are 6, 3 3s are 9 and 3 1s are 3, remainder बचा 1, तो 3 5s are 15. Here it is 15, here it is 23. Now can this be reduced? 21 1s are 21, 21 2s are 42. Now can it be further reduced? No. So 15 2s are 30, 123s are 23. 15 2s are 30 and 23 1s are 23. Now in mixed fraction it can be written like this: 17/23, because 23 1s are 23 plus 7, that is 30/23. Now coming to the next exercise, next option, that is J option. J, K और L आपका होमवर्क है, पर मैं आपको एक बार समझा रही हूँ कि कैसे करना है. So 24/15 divided by 21/50. So the fraction which is written in the numerator part is the first fraction. The fraction which is written in the denominators part is the second fraction. So it will be 24/15 divided by 21/50. From now, from here you have to do कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है इसमें. Next step will be followed by you. In the same way, option number K, option number L will be done in your maths homework copy. Okay? So this is how you have to do it in your homework copy. Option number J, option number K, option number L. Now I am going to explain you about word problems based on fractions. So I am taking one example from my own, that is not from the book. So the example is Rahul has read 2/3 of a 2/3 portion of a book. मैंने portion नहीं लिखा है, of a book is also correct. How much part is remaining? How much part is remaining? So how we have to solve this word problem? We have to check कि अगर आप कोई भी problem solve करते हैं, word problems that is based on fractions, what you have to do, the total quantity of something, if it is not given to you, we assume the total quantity as 1. अगर किसी भी चीज़ की total quantity आपको नहीं mention की गई है, then by default you have to consider the total quantity of anything as 1. For example, a question is there कि Neha has drunk 4/5 of a jug containing milk. यानी कि एक जग में कुछ मिल्क था, अब वो कितना था हमें नहीं पता, नेहा ने उसका 4/5 ड्रंक किया है. फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क लेफ्ट इन द जग. फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क लेफ्ट इन द जग. सो हाउ विल यू फाइंड आउट? अब हमें ये नहीं बताया कि जग में कितना मिल्क है, राइट? So how will we solve these types of questions? So in these types of question, by default we have to consider the total quantity as 1. हम total quantity को क्या मान लेंगे? We will consider the total quantity as 1. Okay? So students, I am solving question number 1. So Neha has read 2/3 of a book.
हाउ मच पार्ट इज रिमेनिंग, तो टोटल 1 हमने माना है, तो 1 में से अगर आप 2/3 सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि कितना पार्ट रिमेनिंग है. Now while subtracting the fractions, I have explained you that if there is no denominator given, so you have to take 1 as the denominator, right? So the LCM of 1 and 3 is 3. So multiply it with 3. So it will be 3 minus 2 upon 3. So it will be 1 upon 3. What will be the answer? 1 upon 3. So the answer of question number 1 is 1 upon 3. राइट अब आपको इतना समझ में आया होगा कि किस तरह से वर्ड प्रॉब्लम्स जो है फ्रैक्शंस की सॉल्व की जाएंगी. नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू. नेहा हैज़ ड्रंक 4/5 ऑफ अ जग कंटेनिंग मिल्क. मतलब उसमें जितना मिल्क था वो हमने मान लिया 1. सो वी विल राइट लाइक दिस. लेट्स सपोज द जग कंटेन्स द मिल्क इन फ्रैक्शंस इज इक्वल्स टू 1. तो अब उसने कितना जो बचा है, फॉर दैट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 minus 4/5. So this is not having any denominator. So what is the LCM of 1 and 5? If you know the answer, please pause the video. So LCM of 1 and 5 is 5. So multiply the numerator and denominator by 5. So 5 minus 4 upon 5. So 1/5 of a jug is remaining. अब आपको कैसे पता चलेगा 1/5 part of the milk in the jug is remaining? Now how will you come to know that whatever you have solved is correct or not? For that what you can do, इतना मिल्क बचा है, इतना मिल्क नेहा ने ड्रिंक किया था. So 1/5 plus 4/5. While adding those two fractions, the answer should be 1. Only then your answer is correct. क्योंकि हमारा टोटल हमने जो assume किया था that was 1. So since the denominator is same, so we will retain the denominator. I have explained you the addition of fractions, right? Now we will add up the numerators. 1 plus 4. So it will be 5/5. So now the questions which I have explained, some of the students usually ask कि मैम जो आप एग्जाम्पल बताती हैं वो करना है या नहीं करना. बेटा you don't have to solve the example. I just explain them to make you understand, right? So 5/5. 5/5 को जब आप सॉल्व करेंगे, रिड्यूस करेंगे, 5 1 जा 5 1 जा, तो आपका आंसर क्या आया? 1 आया. दैट मीन्स आपने टोटल क्वांटिटी आपको रिमेनिंग और ड्रिंक वाली को ऐड करने से मिल रही है. दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट. ओके, नाउ आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल फ्रॉम द बुक ऑल्सो फॉर द वर्ड प्रॉब्लम्स. So it is, I am reading the question for you. 1/10 of a class plays tennis. ठीक है, एक क्लास है जिसमें से 1/10 उस क्लास की टोटल स्ट्रेंथ क्या है हमें नहीं पता. तो 1/10 जो है वो क्या खेलती है उस क्लास से? टेनिस, राइट. नाउ 2/5 ऑफ द क्लास प्लेज बास्केटबॉल. 2/5 ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले वॉट? दे प्ले बास्केटबॉल, राइट. The rest of the class plays cricket. तो अब rest of the class plays cricket. ये आपको कैसे पता चलेगा? What fraction of the class plays cricket? So first of all we don't know the total strength of the class. So by default the fraction for representing the whole class will be 1. 1 will represent the total number of children in the class. Now 1 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे? टेनिस प्लस बास्केटबॉल सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी टोटल में से इफ फ्रॉम द टोटल स्ट्रेंथ इफ यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट टेनिस प्लस बास्केटबॉल, आपको क्रिकेट के मिल जाएंगे, राइट. दिस इज हाउ यू विल फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर प्लेइंग क्रिकेट, द फ्रैक्शन ऑफ द क्लास विच इज प्लेइंग क्रिकेट. इसी तरह से पता चलेगा आपको. सो 1 minus 1/10 plus 2/5. Now as per the BODMAS rule, the things given in the bracket will be solved first. So my question from all of you is, what is the LCM of 5 and 10? Yes students, you all are right. The LCM of 5 and 10 is 10. So 5 2s are 10. So here it will be 1 minus 1 plus 4/10, which is equals to 1 minus 5/10. Again ये आपने ब्रैकेट में सॉल्व किया, ऐड किया, तो आपका आया 5/10.
अब 1 का कोई डिनोमिनेटर नहीं है ना. व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 1 एंड 10? इफ यू नो द आंसर प्लीज पॉज द वीडियो एंड टेल मी. 1 और 10 का एलसीएम 10 होगा, तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 10 माइनस 5 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 10. नाउ यू हैव टू रिड्यूस इट. वंस यू विल रिड्यूस इट, इट विल बिकम 5 1 जा 5 2 जा. सो आंसर इज 1 upon 2. That means 1 by 2 of the class plays cricket. 2 by 5 tennis. 1 by 10 basketball. अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका आंसर सही है? उसके लिए क्या करेंगे? For that you have to add all the 3 fractions. 1 by 2 was cricket. 1 by 10 was tennis. 2 by 5 is basketball. Now what is the LCM of 2, 5 and 10? जब आप 2, 5 और 10 का LCM निकालेंगे, let me take the LCM for you. 2 5 10. 2 1 जा 2 5 जा. So 2 5 and 10 the LCM is 10 only, right? इसका LCM भी 10 होगा. Now we have to add these 3 fractions. So to make the denominator same, I have taken the LCM of the denominators. Now to make it 10, 5 से multiply किया मैंने, यहाँ पे आपका 2 से multiply हुआ. Now 1 5 is 5, 5 plus 1 plus 4 upon 10. So it will be 10 upon 10 and जब आप इसको solve करेंगे क्या आया? 1 आया, जो कि हमने पूरी क्लास का fraction represent किया था. 1 was represented as the fraction for the whole class. That means our answer is totally correct. So I hope you must have understood. You don't have to do these words problem in copies. It was just for understanding. So for further word problems and for the next exercise, we will come up with a new video. So if you have understood, please like the video and have a great day ahead. Subscribe the channel and press the bell icon.